चलिए हम बातें शुरू करते हैं अपनी। लास्ट क्लास में व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इज क्विकली क्लास 12th। लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन। हमने नर्स्ट इक्वेशन की बात करी थी और हमने बात करी थी नर्स्ट इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशंस की। आज की क्लास में मैंने आपको लास्ट क्लास में हेडिंग लिखवा के छोड़ दिया था, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, फर्स्ट लेट मी टेल यू इन हिंदी, देन आई विल टेल यू वंस अगेन इन इंग्लिश। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स उन सेल को बोला जाता है जिनमें दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोड लगा होता है, एनोड साइड पर भी और कैथोड साइड पर भी। लेकिन फिर अगर सेम इलेक्ट्रोड लग रहा है, दैट मींस देयर इज अ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर पासिंग, सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, दोनों पोटेंशियल सेम है। अगर दोनों पोटेंशियल सेम है तो नेट ई नॉट हिसाब से तो जीरो आ जाना चाहिए। लेकिन तब भी ऐसे सेल एग्जिस्ट करते हैं जिनमें सेम इलेक्ट्रोड होने के बाद डिफरेंस जिसका अकर करता है, दैट इज योर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। डिफरेंस जो एग्जिस्ट करता है वो किसका होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, मीनिंग कॉन्सेंट्रेशन सेल्स आर दो सेल्स in which same electrode is used, same electrode as well as electrolytic solution, same electrode as well as electrolytic solution is used, but in different concentrations, in different concentrations. सपोज करिए, एग्जांपल देखिए, मैंने एक सेल बनाया, कॉपर कॉपर सल्फेट M1 मोलर, कॉपर सल्फेट M2 मोलर कॉपर। इस तरीके का मान लीजिए कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें दोनों तरफ कैथोड भी और एनोड भी क्या है, कॉपर से बना है। डिफरेंस सिर्फ किस चीज का है? दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस में डिफरेंस है। नाउ how do you find out the value of cell potential for such a situation? Let's write the chemical equations first. Let's write the equation that is happening, that let's write what is happening at anode first. एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर जा रहा है कॉपर +2 में M1 कॉन्सेंट्रेशन का। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है कि कॉपर +2 M2 कॉन्सेंट्रेशन का जा रहा है कॉपर में। नेट रिएक्शन क्या हो रही है? नेट रिएक्शन हो रही है कि कॉपर +2 M2 कॉन्सेंट्रेशन से जा रहा है कॉपर +2 इन M1 कॉन्सेंट्रेशन। क्लास 12th हम बातें क्या कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। वो ये हमारे जिन्होंने अभी अभी कनेक्ट करा है उनके लिए लेट मी रिकैप्चुलेट क्विकली। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बेटा जी वो सेल होते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ उनमें फर्क क्या होता है? उनकी कॉन्सेंट्रेशन का फर्क होता है, और इसी कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस से उनके अंदर पोटेंशियल वैल्यू जनरेट हो जाती है। तो हमने क्या करा, हमने एक सेल बनाया कॉपर और कॉपर सल्फेट का, एनोड में भी कॉपर कॉपर सल्फेट रखा, कैथोड पर भी कॉपर कॉपर सल्फेट रखा। दोनों तरफ जब हमने रिएक्शनें लिखी, दोनों में डिफरेंस सिर्फ किस चीज का रखा कि कॉपर सल्फेट एनोड साइड है M1 कॉन्सेंट्रेशन में और कैथोड साइड है M2 कॉन्सेंट्रेशन में। अब जब आप इनकी इनकी केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे, एनोड में कॉपर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर +2 इन M1 कॉन्सेंट्रेशन, कैथोड में M2 वाला जा रहा है कॉपर में। नेट चेंज क्या आ रहा है? कॉपर +2 M2 से जा रहा है कॉपर +2 M1 में। अब जब आप इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नर्स्ट इक्वेशन जल्दी से लिख लीजिए, जिन भी बच्चों को आता है इस तरीके के सेल के लिए। नर्स्ट इक्वेशन E cell is equal to E naught cell for such a case will be 0. E naught cell for such a case will be 0 क्योंकि कैथोड भी वही है एनोड भी वही है, is minus 0.0591 by n log of concentration of product copper +2 at M1 upon copper +2 at M2। यहां तक जिसको भी जो दिक्कत आ रही है प्लीज पूछ लीजिए। यहां पर जिसको भी जो दिक्कत आ रही है प्लीज पूछ लीजिए।
क्लास 12th ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दो. What will be the value of E naught for a concentration cell? Class 12th, you will have to be very, very responsive during the class. निचार कह रहा है 0, very good. Who else? सोलेपुरा, चिकलधरा, धमतरी, जुनारदेव, पिंपरी, चंद्रगिरी. Class 12th, you will have to be very responsive with me. आपको जो भी आंसर लग रहा है, whether it is correct or incorrect, आप मुझे जरूर बताएंगे. आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं. 0 होगा. निचार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. E naught will turn to be 0. E naught cell will come out to be 0 क्योंकि कैथोड भी वही है, एनोड भी वही है. Net E naught will become 0. Absolutely correct. ये नोट कर लीजिए जल्दी से. बेटा जी जल्दी से नोट कर लीजिए, और जिसके नहीं समझ में आया प्लीज ड्रॉप अ मैसेज एंड लेट मी नो. Coordinators, I request, please help them. If they are unable to understand, please drop a message in the chat and I will explain once again. For concentration cells, the value of E naught cell is taken to be 0. Reason being, E naught cell is equal to E naught cathode minus anode, and both of them are same. Cathode and anode both are copper. जल्दी से नोट कर लीजिए क्लास 12th. एक केस और करते हैं फिर. शाहपुर, शाहपुरा. Also, one more thing, class 12th and 11th, both of you, when you give the test, जब आप टेस्ट देते हैं, तो please mention your stream very clearly, whether you are from PCM or whether you are from PCB, because the test is checked according to whichever stream you attempt the paper, right? Beta, EMRS, to all the EMRS, whenever you are attempting paper, please mention your stream very clearly, whether it is PCM or PCB. Some children, some EMRSs have written science. अब ये science नहीं समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है, right? Some have not written anything at all. They have just written 11th or 12th, which is again very difficult to understand. Okay. Next case. Example 2 for concentration cells. Example 2 for concentration cells. क्या example है? मान लीजिए मैंने एक सेल बनाया, platinum, H2 at P1 pressure, P1 pressure, comma, H positive. Again, HCl, H positive की जगह लिख लो HCl. H2, P2 ATM. This is again platinum. ठीक है. आपकी बार डिफरेंस किस चीज में है? आपकी बार डिफरेंस है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन में. तो जब मैं इसकी इक्वेशंस लिखूंगी, एनोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है? H2P1 वाला कन्वर्ट हो रहा है H पॉजिटिव में, और कैथोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है? H पॉजिटिव इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H2 एट P2 प्रेशर. नेट रिएक्शन विल बी H पॉजिटिव कट जाएगा, H2P1 से जा रहा है H2P2 में, राइट?
नर्स्ट इक्वेशन बना लो इसकी, जल्दी से क्या लिखोगे? E cell is equal to E naught minus 0.0591 by n log of P2 upon P1. P2 upon P1. Again, value of E naught will be 0, right? Because this is again a concentration cell. Understood, class 12th? See, what we are trying to do is we are trying to make a concentration cell. A concentration cell means that cell in which the electrodes are same, the electrolytes are same, but their concentration or their pressures are different. Meaning there are cells which exist because of the difference of concentration also. So for a successful EMF, for a successful cell to run, you can run it with both the same electrodes as long as they are present in different concentrations, in different amounts, in different pressures. That is also perfectly valid. All right. Jaldi se, all those who have noted and all those who have understood, please drop a message. Quickly, class 12, start getting interactive with me. All those who have noted and understood, please drop a message. और अगर नहीं समझ में आया है तो बोल दो, मैम प्लीज टेल वंस अगेन. निचार नोटेड, ठीक है भाई. सोलेपुरा, बोरिंग, चिकलथरा, हैव यू नोटेड? Junardeo, have you noted? Is the handwriting clear? Repeat. ठीक है सर. ठीक है. Gamnom, thank you for telling me. I will definitely repeat. Chikaldhara has noted. Who else? Who else wants me to repeat? Junardeo, Dhamtari, Katekalyan, Pimpri. See, what are we studying basically? Once again, what is the meaning of concentration cells? Concentration cells means those cells in which the cell is working because of a difference in concentration. It is not working because of a difference in electrode potential. Why? Because when you are making a concentration cell, first and most important, both cathode and anode, both cathode and the anode, they are made up of the same material. They are made up of the same electrode and of the same electrolyte. So if they are made up of the same material, obviously they cannot have a cell potential. They cannot have a difference in the cell potential of cathode as well as anode values. Suppose you had galvanic cell, concentration cell or galvanic cell. Suppose you had a galvanic cell. This galvanic cell you were making with the help of zinc sulfate and copper sulfate, right? This cell was functioning because there is a difference in the potentials of zinc electrode as well as copper electrode. But a concentration cell, if I have to make a concentration cell, my cathode will also be, say for example, copper and copper sulfate only, copper and copper sulfate only,
and my anode will also be copper sulfate. Reason being, I will change the concentration of copper sulfate in both the cases, and that change in concentration will lead towards generation of EMF. That means we have certain types of cells which can function with the same electrodes as long as their concentrations are different. So both cathode and anode are made up of same material, same electrode or electrolyte, whatever. They are made up of the same material. The only difference which comes is in their concentrations, right? The only difference is in the concentration. Now, concentration can be of two types. If you are varying the concentration of electrolyte, you will deal in terms of molarity. Because electrolyte is a liquid substance. अगर liquid substance है, तो आप molarity में deal करेंगे. And if you are changing the concentration of electrode, like in the previous example of hydrogen, you can deal in terms of pressure also. If you are dealing with gaseous species, or if you are changing electrodes, then you can deal with the pressure also. So you can change both of these factors. I have given you examples of both. Copper sulfate wala jo example hai, in this first example, we have changed the concentration of copper sulfate in both the boxes, in the anode box also as well as in the cathode box also. So now if I show you what is happening in the chemical reactions at anode, we know anode pe oxidation hoti hai, copper is getting converted to copper plus 2, but at which concentration? At M1 concentration. Then cathode pe kya ho raha hai? Copper plus 2 is getting converted to copper, but this copper plus 2 is coming at M2 concentration. Therefore, the net chemical reaction, the net chemical change that is happening is from copper plus 2 at M2 concentration to copper plus 2 at M1 concentration. The net change in the cell, the physical change in the cell which is visible is change of concentrations of copper on both the sides. Now, if I write my Nernst equation will be E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by N, whatever is the N factor. In this case, it will be 2 log of copper plus 2 at M1 concentration. Remember, log of product divided by reactant. Product is your copper plus 2 at M1 concentration. Reactant is your copper plus 2 at M2 concentration. So, Nernst equation, the formula will become E cell barabar copper plus 2 at M1 divided by copper plus 2 at M2. Then second thing, and very important, that the E naught cell of concentration cells is always 0. Reason being, E naught cell is the difference of electrode potential of cathode, standard reduction potential of cathode, and standard reduction potential of anode. Now, since both of them are made up of the same material, their potential values will be equal and opposite, which on adding will get cancelled out. That is why the value of E naught cell will come out to be 0 only. Hence, you don't have to worry about E naught cell in a concentration cell. You only worry about an E naught cell in the galvanic cell situation. Okay. Who else? Has everybody else noted? Thamtari, Junardeo, Shahpura, Pimpri. Quickly, I want messages from all of you so that I know that you have noted. Aapke samajh mein aa raha hai. Start interacting, class 12. आप ही लोगों के 11th batches are very, very responsive. आगे बढ़ रहे हैं. Let's move to electrolysis. ठीक है सर, ठीक है संगरदीप, वेरी गुड. भाई अगर किसी को हैंडराइटिंग में इशू हो तो प्लीज बता देना, मैं और क्लियरली लिख दूंगी. इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है गमनो, ओके. Now, electrolysis, or you can say that we are starting with a new topic, that is
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। चैप्टर के स्टार्टिंग में, इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आई हैड टोल्ड यू दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस. One is electrolysis or electrolytic cell, and the other is electrochemical cell. Electrochemical cell was the one in which you were converting chemical energy to electrical energy. मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि दो तरह के सेल्स आपके पास आएंगे. एक होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नॉर्मल वाले सेल जिसमें आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और उससे आपने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया. और दूसरे तरह के सेल्स आएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, in which you will do some kind of an electric energy, which you will use some kind of an electrical energy to drive a non-spontaneous chemical reaction. So first and most important thing, electrical energy is converted to chemical energy. Electrical energy is used to drive some kind of a chemical change. और ये कौन सा केमिकल चेंज होगा? दिस इज पर्टिकुलरली ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मीन्स reactions which don't occur on their own. Non-spontaneous reactions means those reactions which don't occur naturally, or you can say on their own. Those reactions which need some kind of an external force. Reactions which need some external force. Now, meaning, first of all, these are those chemical reactions which do not occur on their own, and you will have to have some external interference by electrical current. अब electrolysis में the first kind of electrolysis that we will study will be of NaCl solution. Example, electrolysis of NaCl. जल्दी से जिसको भी मालूम है NaCl के प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फटाफट से चैट में लिख दो. All those who know any product of electrolysis of NaCl, quickly drop a message in the chat box. Let me see how many of you know. Quickly, let me see how many of you know the product of electrolysis of NaCl. कोई भी अगर आपको, if you even know one product also, that is also all right. Even if you know one product also, that is also all right. निचार बेटा, ये तो आयंस बनेंगे. प्रॉपर प्रोडक्ट बताओ, प्रॉपर प्रोडक्ट बताओ. आइए मैं बताती हूँ. आइए क्लास 12, लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl. ये NaCl कैसा आया है मेरे पास? ये NaCl है मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड. तो यानी कि NaCl भी मेरे पास दो तरह से प्रेजेंट हो सकता है. There can be two different types of NaCl solutions, right? First is when there is a molten NaCl present. Molten NaCl का मतलब सॉलिड NaCl, राइट? प्रॉपर नमक मेल्ट किया हुआ, सॉलिड नमक मेल्ट किया हुआ, उसी को क्या बोलेंगे? मोल्टन NaCl बोलेंगे. एंड सेकेंड हमारे पास क्या होगा? ब्राइन सोल्यूशन. और ब्राइन सोल्यूशन किसे बोलते हैं क्लास 12?
इट इज द aqueous NaCl solution. ठीक है, इट इज द aqueous NaCl solution. तो हमारे पास NaCl can be present in two cases. The first is brine and the second is molten. Molten means solid NaCl and brine means liquid solution. नमक लिया उसको पानी में मिला दिया, that solution will be now known as brine. All right, let's study the electrolysis of both the cases, case A as well as case B. Case A is when you are using molten NaCl. Very carefully. देखो भाई क्लास 12th. NaOH बिल्कुल सही. निचार absolutely correct. NaOH will be one of the products. देखो भाई क्लास 12th कैसे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करना है, आइए फटाफट से देख लेते हैं. NaCl will break as Na positive and Cl negative ion, right? NaCl will ionize as Na positive and Cl negative ions. Now you have the same cell, right? You have the same cell in which you have one anode and one cathode. ये आपकी एनोड की रॉड है, ये आपकी कैथोड की रॉड है, and you have added NaCl. They are connected to a battery. The only difference here is that anode is positively charged, whereas cathode is negatively charged. Beta, this question is asked very frequently in exams, that what is the polarity of anode and what is the polarity of cathode in electrolytic cell as well as in electrochemical cell. आप किसी भी एक सेल का लर्न कर लीजिए, you can memorize for any one cell and the other cell will have opposite polarity. So in the electrolytic cell, anode is always positively charged, whereas cathode is always negatively charged. Now you have dipped two electrodes, one is positively charged, the other is negatively charged. NaCl solution in the electrolytic solution is getting ionized as Na positive and Cl negative. क्या होगा? They will start getting attracted towards their oppositely charged electrodes, meaning एनोड की तरफ कौन अट्रैक्ट हो जाएगा? एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी क्लोरीन, फ्लोराइड. और आप जानते हैं एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन. This Cl negative will get oxidized to 2Cl negative will get oxidized to Cl gas by losing 2 electrons, right? Cl negative will get oxidized to Cl2 gas. कैथोड पे क्या होगा? हमेशा रिडक्शन प्रोसेस होगा. और कैथोड कैसा चार्ज है? कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, मीनिंग द पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड. पॉजिटिव वाला आयन कौन सा है? Na पॉजिटिव है. सो Na पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, गेन these two electrons and get converted to Na solid. It will get converted to Na solid, meaning you will get two products of electrolysis. You will get two products of इलेक्ट्रोलाइसिस. दोबारा देखो कौन कौन से दो प्रोडक्ट मिले आपको. एनोड पे क्या रिलीज हो गई? एनोड पे निकली है Cl2 गैस. देखो एनोड पर निकली है क्लोरीन की गैस. और कैथोड पे क्या मिला है? कैथोड पे मिला है सोडियम मेटल. कैथोड पे कौन मिल रहा है? सोडियम मेटल. These are two very important product of electrolysis. Anode पर there is releasing of Cl2 gas and cathode पर there is deposition of the sodium metal. This happens when you are using molten NaCl. Any doubt so far? Class 12, if any child has any doubt, any problem, please just simply drop a message. If you want me to explain once again, that's also all right. You just have to say. जिनका नोट हो जाए प्लीज एक जल्दी से मैसेज डाल देना ग्रुप पर.
है नहीं मेरे पास। हाँ ठीक है भाई। Who else? Who else? Dhamtari, where are you? Bikrampur, Singardeep, repeat. ठीक है। तो सिंदरी, good afternoon. देखो भाई, what are we discussing? We are discussing the electrolysis product process. First of all, electrolysis means कोई ऐसा chemical reaction करवाना जिसको करवाने के लिए you need some kind of charge, some kind of external force. यहाँ पर हमने देखा नॉर्मल मोल्टन NaCl को आप वैसे नहीं आयनाइज करवा सकते. यू कैन नॉट आयनाइज NaCl otherwise until and unless you pass some kind of electric current from it, right? That means this is an example of electrolysis process in which you are passing current to make a chemical reaction happen. So what does the reaction happen? How does the reaction happen? Molten NaCl. So when you are doing electrolysis of NaCl, there can be two different kinds in which NaCl is available. Either it can be in the molten form or it can be present in the solution form. Molten means a solid NaCl which you are melting, and solution means you have taken some NaCl and you have dissolved it in water. Both of them can be electrolyzed. Both of them can be decomposed with the help of electric current. Now, first case is when I am taking molten NaCl, that means when I am taking solid NaCl. Now, this molten NaCl, when I pass electric current, what all ions it will give? It will give Na positive and it will give Cl negative, right? If it is giving these two kinds of ions, they will start moving towards their oppositely charged electrodes. One will go towards positive charged electrode and the other will go towards negatively charged electrode. Now, in an electrolytic cell, graph no. Now, in an electrolytic cell, anode is always positively charged. The polarity of anode is always positively charged, and the polarity of cathode is always negatively charged. Positively charged anode, what kind of ion it will attract? Obviously, it will attract the negatively charged ion towards itself. Yes or no? So if it is attracting the negatively charged ion towards itself, and we know one thing for sure, that on anode, which process happens? Oxidation process happens. That is why Cl negative will get oxidized to Cl2 gas. So first product of electrolysis of NaCl is generation of chlorine gas. Now this chlorine gas is very important. Why, everybody? Because this chlorine gas is used as a raw material for many different kinds of industries. It is used as a raw material for making HCl. It is used as a raw material for making bleaching powder. आपने देखा है bleaching powder एक बहुत important compound है which is used to bleach or color fabric. That is also made up of chlorine gas only. So यहाँ से NaCl लिया जाएगा, it will get electrolyzed. You will get Cl2 gas. It will then be transported to different industries. Then similarly, what is happening at cathode? Since cathode is negatively charged, the positively charged ion is moving towards it, which is sodium. Now, whatever is the polarity of cathode, we know cathode पर हमेशा process कैसा होगा? Reduction process होगा. Same यहाँ पर ही reduction process हो रहा है. It is getting reduced. It is gaining electrons, and you are getting solid sodium metal. This is the entire, that means you are getting two product of electrolysis of NaCl. One is Cl2 gas at anode and the other is sodium metal at cathode. All right. All right. Then what happens in the electrolysis of solution of NaCl? How is that process different?
आइए वो भी देख लेते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जिन जिन का हो जाए जल्दी से ड्रॉप अ मैसेज। चंद्रगिरी, यू नोटेड? शाहपुरा, हैव यू नोटेड? चलिए, बी, सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन या एक्वस सोल्यूशन। Aqueous solution of NaCl. Now, aqueous solution of NaCl means I have two things in the mixture. I have NaCl also, as well as I have water also, H2O also, right? I have both the things present and both of them can get ionized. NaCl can also get ionized. See, what all are the chemical reactions which are now happening? NaCl will also get ionized in Na positive, Cl negative. H2O will also get ionized in H positive and OH negative. Both of them can get ionized. See, of course, because you are passing current. And since you are passing current, you can get a mixture of ions. Whatever is possible to get ionized, it will get ionized. Now, what all are the possible reactions? See, what all are the possible reactions at anode? Anode is remember, anode is the positively charged, meaning the negatively charged ion will move towards anode. Negatively charged ions are Cl negative and OH negative. Cl negative. First possible reaction is that Cl negative gets oxidized to Cl2. Right? First possible reaction is that Cl negative gets oxidized to Cl2. And second possible reaction is H2O getting oxidized, this OH negative getting oxidized to O2 gas. This OH negative getting oxidized to O2 gas along with the liberation of H positive. Any these two are possible, right? एक्चुअल में क्या होता है, OH नेगेटिव नहीं जाता, एक्चुअल में वाटर ही जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है. In practicality, in actuality, what happens is water gets oxidized to O2 gas. But since the concentration of Cl negative is very high in your solution, that is why the possible reaction which actually happens at anode is reduction of Cl2. इनमें से जीत कौन जाता है? इनमें से ऊपर वाली रिएक्शन जीत जाती है. Why? Because डब्बे में सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव ज्यादा है पानी के कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहीं पर भी डाइल्यूट वर्ड नहीं यूज करा. I have used aqueous solution, and this aqueous solution is very concentrated solution in terms of NaCl and water, right? That is why, since the amount of Cl negative is more, quickly Cl2 gas gets liberated. Then what all is the possible reaction? What all happens in the possible reaction at cathode? Again, cathode is negatively charged. So again, two different kinds of reactions can possibly happen. First, Na will get reduced. Na positive will get reduced to Na. And second is H2O will get reduced to H2 gas. Again, two different kinds of reactions are possible. Na positive can also get reduced to sodium metal, and H2O can also get reduced to H2. Now, what happens in this case? So H2O wins in this case and sodium is lost. Why? Because reduction potential of sodium is very less than reduction
E naught reduction potential of water. Reason being, E naught SRP of water is more than E naught SRP of Na positive. That is why H2O wins in this case and it forms the hydrogen gas. That means now what all is left in my solution? See, I had Na positive, Cl negative. Cl negative तो बन गया Cl2 गैस, पानी बन गया H2 पॉजिटिव में. तो अब मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है? आई हैव इन माई सोल्यूशन see, first write all of this and then I will tell you what happens later. यहां तक आया समझ में? Once again, why is the case of solution different from molten? Because in molten you don't have water. Molten NaCl में आपके पास पानी नहीं था, solution NaCl में आपके पास पानी भी था. वो भी आयनाइज करेगा and it will show different kind of reactions. If it shows different kind of reactions, then there will be a possibility of which reaction will take priority over the other one. है ना? बेटा ये तो फटाफट से पॉसिबल रिएक्शंस लिख लीजिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. अब की बार, because there is water also, hence there will be involvement of water in the chemical reaction as well. Quickly, once you have noted, please drop a message. ठीक है? Any child facing issues with the language, any EMRS facing issue with the language, किसी को language की दिक्कत आए तो वो भी बता दीजिए please. All right, Nichar. Singardeep. शाहपुरा लिख करके मैसेज डाल दीजिए. तो सिंधरी ऑल्सो वेरी गुड. ये समझ में आ गया आपको कि सोडियम क्यों जीत गया है, वाटर क्यों जीत गया कैथोड में और सोडियम क्यों हार गया? बिकॉज देर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल वैल्यू. देर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल वैल्यू. ठीक है सर. जनार्देव ऑल्सो नोटेड एंड अंडरस्टूड. तसारिया. अब अगर मैं आपको प्रोडक्ट बताऊं तो देखो भाई, एनोड पे Cl2 गैस, राइट? एनोड पर Cl2 गैस निकल के आ गई, कैथोड पर H2 गैस निकल के आ गई, कैथोड पर H2 गैस निकल के आ गई. इन solution now you are left with Na positive ions because you have not made anything of them yet. देखो आपके ये Na positive ions as it is रखे हुए हैं, अभी हमने इनका कुछ करा नहीं है. और आपके पास ये OH negative ions भी हैं जो अभी तक रखे हुए हैं, क्योंकि H positive तो चला गया as H2 but OH negative is still remaining in the mixture. तो ये क्या करते हैं आपस में in solution, Na positive combines with OH negative and this gives us
NaOH as the third product. Very, very, very important because this is one of the methods of synthesizing NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कंपाउंड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सॉल्वेंट है, और उसको सिंथेसाइज करने का ये एक बहुत मेजर तरीका है, that is electrolysis of the brine solution. So there are three products of electrolysis. When you talk about NaCl, if you are taking molten NaCl, you will get Cl2 gas and sodium metal, right? And if you are taking aqueous solution of NaCl, you will get Cl2 gas, H2 gas and NaOH solution. निचार ने बिल्कुल ठीक बताया था स्टार्टिंग में that NaOH is one of their products. ये है थोड़ी सी समरी of NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस. Right? This part is important. How NaOH is also generated and why NaOH is not generated in the previous case, in the molten case. आगे चलते हैं क्लास 12 फैराडेज लॉज. आप जल्दी से नोट कर लीजिए एंड आगे चलते हैं टुवर्ड्स फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. तो अगर एक बात बता दो क्लास 12, उसने एक क्वेश्चन दे दिया. सपोज उसने क्वेश्चन क्या दे दिया, what all are the product of electrolysis, what all are the product of electrolysis of aqueous KCl solution. क्या दोगे आंसर? जल्दी से बता दो, जिस जिसने नोट कर लिया है और जिस जिसके समझ में आ गया है. ठीक है, तो संजरी वेरी गुड. अब तुम सवाल बता दो, व्हाट ऑल इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस KCl सॉल्यूशन. NaCl नहीं दिया मैंने, आपके बाद KCl दे दिया. क्या बनेगा बताओ? मिलता जुलता ही आंसर होगा, राइट? पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे जल्दी से बता दो. What all will be the products of electrolyzing KCl solution? ओके, निचार का आंसर आ गया है, वेरी गुड. निचार का आंसर आ गया है, वेरी गुड. हु एल्स? हु एल्स? तो सिंदरी वेरी गुड, बिल्कुल सही. और किसी के नहीं आया क्या? शाहपुरा, जनार्देव, पिंपरी, बाहर, वेरी गुड, बिल्कुल सही. देखो ट्रिक क्या थी, KCl दिया हुआ है ना, तो Cl2 भी निकलेगी, H2 भी निकलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा कौन होगा? KOH होगा. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाने का तरीका क्या है? KCl है. इस पे लिख लो, ये पिछले ही साल पूछा गया है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ no, this year only, this year or last year, I remember, I don't exactly remember, but I think this is a लास्ट ईयर का क्वेश्चन. ये इतना सिंपल सवाल पूछा हुआ है पिछले साल में. धमतरी बिल्कुल सही. बेटा जिस जिसके आंसर आ गए हैं जल्दी से लिख दो ना, चैट में लिख देना, सो दैट आई अंडरस्टैंड
मेरे समझ में आ जाए कि आप लोगों को पता लग गया है। गमनोम, योर आंसर? This is such a simple question of one of the previous years and a very recent time. Next, Faraday. Faraday's laws of electrolysis. Faraday's laws of, हाँ चिकलथरा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। फैराडेज लॉज ऑफ, आइए आ जाइए जल्दी से, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर। फैराडे एक साइंटिस्ट हुए हैं जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, आप जानते हैं, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, है ना। ये वही वाला फैराडे है जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस पर दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉज दिए हैं। व्हाट लॉज दीज आर? ही हैज टॉक्ड अबाउट द अमाउंट ऑफ electrolyte deposited on passing certain amount of current. सपोज करिए मुझे किसी पीस ऑफ ज्वेलरी पर कोई सर्टेन मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है। सपोज करिए मुझे किसी सिक्के के ऊपर, किसी कॉइन के ऊपर चांदी की परत डिपॉजिट करवानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर दैट आई विल हैव टू वे द अमाउंट ऑफ सिल्वर विच विल गेट डिपॉजिटेड ऑन माई कॉइन, एंड मुझे उस अमाउंट को वे करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आई विल हैव टू पास करंट थ्रू माय सॉल्यूशन सो दैट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉइन। मीनिंग फैराडे ने बेसिकली किस बारे में बात करी है? फैराडे ने बात करी है कि आप कितना अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या इलेक्ट्रोड, आप इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा। तो फैराडे के अकॉर्डिंग देयर आर टू लॉज। फर्स्ट लॉ सेज First law says that first law क्या कह रहा है फैराडे का? कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, सॉलिड होगा तो डिपॉजिटेड होगा, या कितना लिबरेट हुआ है, गैस होगी तो लिबरेट होगी, एट एनी इलेक्ट्रोड। इस बारे में फैराडे का फर्स्ट लॉ है, राइट। तो फैराडे ने बोला कितना अमाउंट लिबरेट हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना चार्ज आपने पास किया है। Q स्टैंड्स फॉर चार्ज। यहां से इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टोटल टाइम इट इज पास्ट फॉर, कि भाई हमने 5 एम्पियर का करंट पास करा 15 मिनट के लिए, तो टोटल करंट, तो टोटल चार्ज आपने कितना दिया? करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। W is proportional to I into T, and when I remove this proportionality sign, I will get a constant known as Z. अब ये Z क्या चीज है? This Z is known as electrochemical equivalence. अभी मैं लिखवा देती हूँ, देखो W क्या है? W है ये वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड है W। Z क्या है? Z is known as electrochemical equivalence. I is the current and T is the time for which it is passed. ठीक है, T क्या है? टाइम है for which it is passed. अब W इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, वो आप कैसे निकालेंगे? तो Z का फॉर्मूला लिख लीजिए, Z होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। और इक्विवेलेंट वेट का मतलब आप जानते हैं, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इनटू 96500। ये है Z का फॉर्मूला।
हमें इसको यहाँ पुट करना है इनटू चार्ज इनटू टाइम. मैं क्वेश्चन कराती हूँ इसके बाद, राइट? आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. फैराडे ने किस बारे में बात करी है? फैराडे हैज टॉक्ड अबाउट हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस will be deposited or will be liberated when a certain amount of charge is passed. So he said जितना चार्ज पास करोगे उतना ही ज्यादा सब्सटेंस लिबरेट होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा. After we remove the proportionality sign, we get this formula which is W बराबर Z into I into T. Let's do one question, class 12th, so that we can understand the application of this formula. All right. Please note this down and let me know if there are any problems. I will give you a question also. Question. All right, beta ji. Let's solve a question, right? Question कह रहा है 5 ampere of current is passed through a solution of जिंक सल्फेट. ठीक है, आपने जिंक सल्फेट का एक सोल्यूशन लिया जिसमें से 5 एम्पियर करंट को पास करा फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर 40 मिनट्स. फाइंड द अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड. You have to find out the amount of zinc which is deposited. जल्दी से पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी. ऑप्शंस दे देती हूं मैं, चलो आपको. क्लास 12th ऑप्शंस आर ए 40.65 ग्राम, 4.065, 0.4065 and D 65.04. Yellow. I have given the options also. फॉर्मूला आप जानते हैं, वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी. Z का फॉर्मूला आप जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T. Remember, time should be put in seconds. Remember that time should be put in seconds. जल्दी से let me see who answers the fastest. Let me see सबसे पहले आंसर किसका आता है. I have given you the options also.
आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम ऑल दोज, चाहे करेक्ट हो चाहे इनकरेक्ट हो. धमतरी, बाहार, तोरसिंद्री, निचार, गमनोम, सिंगरदीप. अच्छा, पहले मुझे बता दो व्हाट इज द एन फैक्टर. एन की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे क्लास 12th? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन फॉर दिस फॉर्मूला? कंद्रिगा, तोरसिंद्री 2. अच्छा, और कोई? बाय हर, निचार ऑल्सो सेज 2. बिल्कुल सही दोनों का. तोरसिंद्री ऑल्सो, निचार ऑल्सो. 2 ही पुट किया जाएगा. अच्छा, मुझे बता दो इसमें मॉलिक्यूलर मास क्या पुट करोगे, जिंक का या जिंक सल्फेट का? मॉलिक्यूलर मास किसका पुट करोगे, जिंक का या जिंक सल्फेट का? निचार कह रहा है सल्फेट का. ओके. निचार थोड़ी गड़बड़ है बेटा. देखो डिपॉजिट कौन हो रहा है, डिपॉजिट जिंक हो रहा है, जिंक सल्फेट नहीं. तो हम मॉलिक्यूलर मास भी जिंक का पुट करेंगे. क्लास 12 डिपॉजिट कौन हो रहा है, जिंक हो रहा है. वेट आप किसका निकाल रहे हो, जिंक का निकाल रहे हो. तो कीप इन माइंड ये मॉलिक्यूलर मास भी किसका पुट करेंगे, वही स्पीशी विच इज गेटिंग डिपॉजिटेड. और डिपॉजिट कौन हो रहा है यहाँ पर, जिंक हो रहा है. जिंक सल्फेट नहीं पुट कर देना, गलत हो जाएगा. जिंक सल्फेट मत पुट कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, है ना. वेरी गुड चिकलधरा, बिल्कुल सही कह रहे हो. जिंक का पुट करना है, जिंक सल्फेट का नहीं. और फिर कितना होता है जिंक का मोलर मास, ये भी बता दो अब. ये भी बता दो जल्दी से चिकलधरा. जिंक का मोलर मास कितना पुट करूं फिर मैं? 65, 63.5 बेटा, टू बी एग्जैक्ट 63.5. अच्छा नहीं नहीं, 65.3, सॉरी सॉरी. अरे 65 है, निचार सही कह रहे हो आप, 65 है. तो सिंदरी 65 नहीं, चिकलदरा बेटा 65 पुट करना है. Keep in mind, class 12, molecular mass, everything will be put according to the one which is getting deposited. Zinc sulfate is not getting deposited. Zinc is getting deposited. So please put the values of that only. है ना, 65 पुट करेंगे. अब बता दो आंसर, अब जल्दी से आपको आंसर बताओ फटाफट. विच ऑप्शन? कंद्रिगा, EMRS B and कंद्रिगा. हैव यू सॉल्व? एक आंसर आ गया मेरे पास, निचार का. ओके, 0.46. अरे, और कोई? निचार रिविजिट करिए आंसर बेटा, गड़बड़ है थोड़ी सी. ये किसका आंसर आया है सर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस EMRS जिन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन बी? प्लीज लेट मी नो योर नेम ऑल्सो, विच EMRS आर यू फ्रॉम? पेंद्री, एक्सीलेंट, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे. पेंद्री, पूरी क्लास एंड होने के बाद तुम अब आए हो मेरे सामने और बिल्कुल सही जवाब के साथ आए हो. मजा ही आ गया. वेरी गुड पेंद्री, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. भाई वी हैव अ करेक्ट आंसर एंड द फर्स्ट वन टू आंसर वाज EMRS पेंद्री. वेरी गुड. हु एल्स? और किस किस का आ गया बता दो, कंफर्म कर दो क्या पेंट्री का आंसर ठीक है या नहीं, या कुछ गड़बड़ तो नहीं है. धमतरी बी. भाई धमतरी इज आल्सो सेइंग बी. लेट्स सी हु एल्स इज थिंकिंग बी. कई बार ही फिजिकल के क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है. लास्ट क्लास में रिमेंबर इवन आई हैड मेड अ स्मॉल मिस्टेक. सो प्लीज कंफर्म ऑल ऑफ योर आंसर्स आल्सो. तो सिंदरी बी, चिकलधरा आल्सो सेज बी. वेरी गुड, बी ही है करेक्ट आंसर. बी ही है करेक्ट आंसर. निचार तुम्हारा आ गया है. वेट इज 65/2 into 96500.
multiply by 5 ampere for 40 minutes in 2 seconds. ध्यान रखना, सेकंड्स मत भूल जाना, गड़बड़ हो जाएगी वरना. इसका आंसर आएगा 4.065 grams, which is the option B. क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब. ये नोट कर लीजिए सॉल्यूशन जिनका नहीं हुआ है. वी विल मूव ऑन टू द सेकंड लॉ. प्लीज इसको नोट कर लीजिए. Then we will move on to the second law. Any child who was unable to understand this numerical? Pimpri, Shapura, any child who was unable to understand? All right, Dhampari. एक law और करते हैं, which is the last law, that is Faraday's second law. Let's see what he had to say in the second law. Beta, what have I done? Molar mass of the one which is getting deposited divided by n factor, which is 2. Zinc sulfate mein valency of zinc is zinc plus 2. Total number of electrons changed are 2. Then into 96500 into amount of charged passed, multiply by time, time converted to seconds. Next, Faraday's second law. Faraday's second law. Noted, Torsandri? ठीक है sir. सेकेंड लॉ ने क्या बात करी है? सो सेकेंड लॉ टॉक्स अबाउट अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. सेकेंड लॉ में उसने बोला दैट if you want to electroplate more than one different kind of element, more than one different kind of substance, तो आप मल्टीपल तरीके के सेल्स के इलेक्ट्रोडों को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं. दे कैन, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स कैन बी connected through series, and then we will pass the same amount of charge through all of them connected, and then we will see the amount of electrode deposited on each in each and every case. So Faraday's second law talks about different electrolytic solutions connected through series in different electrolytic solutions which are connected through series. If you are passing the same amount of charge, if you are passing the same amount of charge, then how much electrode or how much substance will be deposited or will be liberated? Then weight of substance which is either deposited or liberated is proportional to their equivalent weight. As simple as that. Is proportional to their equivalent weight, because you are passing the same charge, you are passing it for the same duration. So I is also same, T is also same. What is different? The equivalent weight of both the electrolytes. So you can say that suppose you have two different kinds of cells which are connected in the series, then the ratio of their weight deposited, W1 by W2, will be equal to the ratio of their equivalent weights, E1 upon E2. ये कैसे निकला? देखो, देखो, very simple. How did I calculate this ratio? For suppose you have two cells, ठीक है? Suppose you have two cells, ठीक है? पहले सेल के लिए I will write W1 is equal to E1 upon 96500 into charge into time, right? दूसरे सेल के लिए I can write weight deposited is equal to equivalent weight of that cell divided by again 96500 into same amount of charged pass.
Same charge means I will also be same and T will also be same. Now, if I take their ratio, I and T will get cancelled out. 96500 will also get cancelled out. What will you get? Weight 1 by weight 2 is equal to E1 by E2. This is the second law of Faraday, in which he talks about weight of cells connected in series is proportional to their equivalent weight. Simple, very, very simple. Very, very simple. ठीक है सर. Once again, हाँ तो सिंपली देखो. Now what he's saying in the second law, he's saying if you connect multiple cells, suppose you are connecting two cells together, two different cells together, but you are passing them, but you are giving them the same amount of charge. हमने फिजिक्स में देखा है दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, सीरीज कनेक्शंस एंड पैरेलल कनेक्शंस. ओवर हियर यू आर connecting them together, you are giving them the same amount of charge, means now both of their deposition will start. Suppose you have cell 1 and suppose you have cell 2. Both of them are connected through same battery, so they are getting same charge for same amount of time. Now he's saying that the amount of substance deposited or liberated will be directly proportional to just their equivalent weights. तो हमने क्या करा? Suppose you have two cells connected. For the first cell, what will be the expression? W1 is equal to equivalent weight, that is Z into I into T. Z is equivalent weight of that particular solute या that particular substance. देखो दोबारा. Suppose you have two cells connected. Suppose you have, this time let's take three cells connected, not two. Suppose you have three cells which are connected, right? And you are passing same charge through all three of them. Same charge through them. So what will happen? The weight deposited in the first cell, what will I write the expression? Weight in the first cell is equal to Z1 into I into T. Z1 is E1 by Faraday into I into T. What will I write for second cell? What will I write the expression for second cell? उसमें कितना वेट डिपॉजिट हो रहा होगा? W2 is equal to E2 by Faraday into I into T. I and T will remain the same because I am giving them same charge. Same charge means current into time. ये same है दोनों cases में. What will happen for third cell? Weight 3 is equal to again E3 by Faraday into IT. Right? Now, if I take their ratio, if I take W1 is to W2 is to W3, what will I get? If I divide them together with one another, IT will get cancelled. Faraday will also get cancelled. This ratio will come directly equal to E1 is to E2 is to E3. That means weight deposited is directly proportional to the equivalent weight. That is as simple as that. Faraday ने बोला if you are connecting more than one cells, तो charge अगर आप बराबर पास कर रहे हो तब भी तीनों में अलग अलग अमाउंट का सब्सटेंस डिपॉजिट होगा. क्यों होगा? क्योंकि तीनों के इक्विवेलेंट वेट्स अलग अलग होंगे. राइट? ये भी एग्जांपल नोट कर लीजिए क्लास 12th. With this we are winding up today's lecture. All right, listen to me very carefully now, class 12th, what all topics are left and what we will pick up in the next lecture. So in the next lecture, we will pick up batteries,
We will pick fuel cell and corrosion. These topics will be picked up in the next class, and the next class will be the last lecture of electrochemistry. So don't forget to revise all that we have done up until now. अभी तक हमने जो भी electrochemistry में कर लिया है, don't forget to revise all of it, because these are all very important applications which we will be discussing in the very next lecture. All right. So till here, all those who have noted and all those who have understood, please drop a message in the chat box and you can disconnect. We are winding up today's lecture over here only. All right, class 12, bye-bye and keep studying. Please let me know if you have noted and understood so that I can. All right, thank you so much. Bye-bye, Nichar. Bye, Chakaldhara. Take care and keep studying, everybody. Thank you so much for connecting, Chandragiri. Please answer questions also next time. If you want me to show any particular slide, ma'am, that was missed, please show once again. That also you can ask right now. अगर किसी का कोई particular slide miss हो गई है, please ask that also right now. Last second page. अच्छा. This page, Torsindri, this or previous? Bye bye, Janardeo. Take care. Thank you so much, Kandrika. Thank you for connecting. Kandrika, next time I will be giving questions and you will be answering. All right? All right. Wonderful. Okay. ठीक है, लो तोरसिंद्री आप नोट कर लो. बाय बाय कंद्रिका, टेक केयर बच्चा लोग, कीप स्टडीइंग. ये मैं और थोड़ा सा नीटली लिख दूं तोरसिंद्री, नहीं समझ में आया तो देखो. You too, Kandrika. Have an excellent evening from my side. All right. पेंद्री, wonderful. मजा आ गया आपके साथ आज. Please connect next time also when we finish the chapter and answer all my questions. Shapura, understood? All right, Torsindri. Noted. Then you can disconnect. Keep studying and let's meet in the next class when we wind up this chapter. Take care. You will answer all my questions. You will also answer all my questions like you always do. All right. Bye-bye. Bye-bye, bacha log. Take care.